Bismillahirrahmanirrahim. We are starting a new topic, that is von Dimter equation. I have shared 30 slides. It's very important that you understand what is the importance of this equation, where we can use it, why we use it, and what is the application. In these slides, not everything is related to your course. Means that there are few things like maybe more mathematical expressions are given in these slides. You don't need them. Only thing is you understand what you can understand, and I will try that maximum of things are covered. Now let's start with slide 2. There, the important terminology which is used, that is about theoretical plates. In fact, there are actually two theories which explain the separation process in the general chromatography. This is applicable in liquid chromatography as well as in gas chromatography. So you will see that few terms they are related to GC and few terms they are related to LC, because the basic principle of separation is same. So the two theories, one is the plate theory and other is the rate theory. Plate theory and rate theory, and this term, that is theoretical plate, is linked to the plate theory. Now what is the plate theory in chromatography? uh, it is considered that, let's say, the column, there are so many theoretical points which are present inside the column. And what are theoretical points? This is the point, or you can say this is the plate, where equilibrium is established between the triangle. That is, analyte is actually getting equilibrium between the stationary phase and the mobile phase at one point in the column. Then this equilibrium is disturbed, and at a new place again equilibrium is established. Means now analyte is present at different position in the column, and equilibrium between stationary phase and mobile phase is established. Then this equilibrium is disrupted, and again at a new position the equilibrium is established. That means the analyte moves across the column by developing equilibrium on certain points, and that point is called as a plate. Now this plate is imaginary one, that's why it is called as theoretical plate. The name comes from the imaginary equilibrium points, because it is considered, I am repeating, it is considered that the analyte is at equilibrium between the stationary phase and the mobile phase. Now these theoretical plates, they are shown by the number n. As these theoretical points, or you can say the equilibrium points, are controlling the separation process, we can say higher the number of these theoretical points or the equilibrium points, better would be the separation. So that means we have to increase the n. And how n can be increased? There is a column length, and that column length is generally fixed, because we purchase a column, then that column is packed. Now how you do the packing? You do the packing with the stationary phase. Length, let's say 5 centimeter of the column, that will be fixed. In particular length of the column, you can create this n number as a varying number. You take one type of stationary phase, number of theoretical plate would be different. You take another kind of stationary phase, number of theoretical plate would be different. You do the close packing, number of theoretical plate would be different. You do the loose packing, which is not advisable, number of theoretical plate will be less. So higher the number of theoretical plates means higher are the number of equilibrium points, better would be the separation. So we always try to get this number as high as possible. And I have given already examples in the class that when you do the packed column, the number of theoretical plate, they are around 30,000, 40,000, 50,000. But when you have the monolithic column, where we name it as a media of reduced discontinuity, there you will get the theoretical plate number to 100,000, means वो लाखों में है. Now how you achieve it?
The simple equation is n, that is number of theoretical plate, is equal to length divided by h. L is the length of the column, and what is h? H is the height of the theoretical plate. This is very important to understand. HETP, height equivalent to theoretical plate. Now this height, if you want to get higher number, just look at the equation, n is equal to L over h. If you want to get the n value higher, that means h value should be lower, because h is in the denominator. That means theoretical plate height is less. Now what that does mean? If you divide a column into these number of theoretical points, if the height is going to be less, means एक प्लेट है उसकी हाइट जो है वो कम है, मीन्स जो एक प्लेट है उसने एरिया कम ऑक्यूपाई किया है, तो उसका जो नंबर होगा थ्योरेटिकल प्लेट का वो बढ़ जाएगा. सो HETP मीन्स हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट. जो एक थ्योरेटिकल प्लेट डेवलप हो रही है इमेजिनरी, अगर उसकी हाइट कम होगी तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेंथ में जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड HETP. और हमारी एफर्ट होती है कि HETP को मिनिमम रखें. अब ये नहीं है कि हमने कॉलम के अंदर जाना है और हमने उसके अंदर कोई प्लेट की हाइट डेवलप करनी है. नो, इसको हम आगे चल के देखेंगे कि HETP जो है वो किन किन फैक्टर्स को जो है वो हम कंट्रोल करें तो ये इफ़ेक्ट होती है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें इस हाइट को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल प्लेट भी इमेजिनरी है, तो इस तरह इसकी जो हाइट है वो भी इमेजिनरी है. और उसको हम देखेंगे आगे चल के जब हम वान डिम्टर इक्वेशन को ओपन अप करेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो हाइट वेरी करती है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है वो आप गौर से सुने और इसको जो है वो समझें. Slide 3, that is the continuity of the previous slide. As I have said, this is a plate theory. Again, there is a plate height. This is simply called h. It is also abbreviated as HETP. In somewhere you will see it is written h and it is written HETP. Both can be used. Height, which is plate height, or height equivalent to theoretical plate, and n is the plate number. And both characteristics, they are important, because I have already mentioned the number of times uh, this number where equilibrium is developed. Higher the number is, better is the efficiency of the separation. Now in the second point it is written that in chromatography this n reflects how many times the solute partitions itself between the two phases. Because when we say the separation process is going on, what is separation? Analyte actually gets distributed between the stationary phase and the mobile phase. At one point of time, the solute is in the stationary phase, means it is adsorbed onto the surface of the stationary phase, and at another time it is carried by the mobile phase, because both of things are present in parallel. मैं उर्दू में रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है, इसमें जो सल्यूट है या सल्यूट के मालिक्यूल्स हैं वो एक वक्त में वो एड्जॉर्ब होते हैं स्टेशनरी फेज़ के पास, और दूसरे वक्त में वहाँ से एल्यूट होकर वो उसको कैरी करके ले जाता है मोबाइल फेस. तो एक जब वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर या वो आके अटैच होता है, एड्जॉर्ब होता है, तो वो उस पॉइंट को हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्लेट. मींस वहाँ पे आके एक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है. फिर वो डिस्टर्ब होता है, मींस कौन डिस्टर्ब करता है उसको, मोबाइल फेस करता है. वो एल्यूट होकर दोबारा एक और स्टेशनरी फेज़ के पॉइंट पे एडजेसेंट टू दैट वो जो है वो फिर वहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप होता है. ठीक है, तो एन इफेक्टिव क्या होगा, दैट इज लेंथ ओवर एच, मीन्स हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट. जितनी कम होगी जो एन इफेक्टिव होगा, या इसको सिंपली एन कह सकते हैं, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, उतना ही ज़्यादा होगा. और किसी भी कॉलम के लिए ये जो एन है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे ये मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने जाना नहीं है, बट ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है कि एन इज इक्वल टू टी आर विच इज़ अ रिटेंशन टाइम, डब्ल्यू बी विड्थ ऑफ द पीक. क्या मतलब विड्थ ऑफ पीक, जब क्रोमेटोग्राम आ जाता है हमारे पास तो उसमें जो पीक डेवलप होती है उसकी जो विड्थ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर पीक होती हैं ये जितनी नैरो होगी उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतनी ही बेटर रेजोल्यूशन होगी. द नेबरिंग पीक्स वुड बी वेरी क्लियर व्हेन रेजोल्यूशन इज़ हायर. सो
किसी भी कॉलम के लिए जो n है वो कैलकुलेट हो सकता है बाय दिस इक्वेशन। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशन नज़र आएंगी कि अगर आप किसी कॉलम का थ्योरेटिकल प्लेट चेक करना चाहते हैं। अब देखें, इसका ताल्लुक एफिशिएंसी के साथ है, रिटेंशन टाइम। इसका मतलब है कि कोई और मेथड नहीं है कि आप किसी कॉलम को फिजिकली जो है वो कहें कि इसका नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ये है, नहीं, ये आउटकम बेस्ड है। मींस वंस सेपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड यू कैन सी हाउ द क्रोमेटोग्राम लुक्स, मींस what is the peak width what you have obtained after the separation process। अब क्या क्या ऐसे जो है वो सारी कंडीशंस होंगी, सेपरेशन कंडीशंस, कि आप उनको प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे कि आपके पास जो पीक आ रही है वो जितनी नैरो आए उतनी ही आए, जितनी नैरो होगी उतनी बेहतर है, क्योंकि उससे रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर होगी। इसका मतलब है कि हर एक कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होकर आ रहा है। जितनी पीक ब्रॉड होगी वो क्या होगा, वो अपनी लपेट में लेगा जो नेबरिंग सिग्नल्स हैं या नेबरिंग पीक्स हैं उनको। तो इसका ताल्लुक क्या है, रिटेंशन टाइम और फिर पीक विड्थ कितनी है। इससे आप जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 16 स्क्वायर लेके इसको आप जो है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस ये आउटकम बेस्ड है, ये कंडीशंस हैं कि आप किसी कॉलम की कितनी बेहतर सेपरेशन एफिशिएंसी ले सकते हैं। ऑल्दो उसकी लिमिटेशन जो है वो डिफाइन होगी स्टेशनरी फेज के नेचर पे। अगर आप बहुत बड़ा पार्टिकल साइज़ लेते हैं तो वहाँ पे भी एक लिमिट होगी कि आप कितना जो है वो कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करके आप जो है वो बेहतर पीक विड्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल नंबर है जो कि कंट्रोल्ड होता है ऑपरेशनल सेपरेशन कंडीशंस के साथ। Slide 4, again having the same message, n is equal to L over H. I have described everything, important statement, the last one, the efficiency of chromatographic column increases as the plate count or the plate number increases। और प्लेट काउंट कब इंक्रीज करेगा, जब उसकी प्लेट हाइट जो है वो कम होगी। ये वही बात है कि कॉलम को आपने कितने पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अगर ज़्यादा पोर्शन में डिवाइड करना है, कॉलम की लेंथ तो फिक्स्ड है, लेट से 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो आप उसको जितने कम जो है वो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, मींस उसकी जो हाइट कम होगी उतना ही जो एन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द प्लेट काउंट और द विद प्लेट नंबर। और प्लेट नंबर कब बढ़ती है, जब उस प्लेट की जो हाइट है वो क्या होती है, कम होती है। Slide 5, it is again explaining the same thing what I have discussed about the column efficiency. That is, a column is made up of number of these discrete and contiguous narrow layers, and these narrow layers, these are the narrow plates, they are called as the theoretical plate. And at every plate equilibrium is developed for the solute between stationary phase and the mobile phase. That means across the column or across the stationary phase the solute is moving in a stepwise manner, means from one theoretical plate to another theoretical plate to another theoretical plate. And this is basically the plate theory to explain what are the factors which are controlling the movement of the solute particles across the column. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड से इसको छोड़ दें क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी, वो फिर चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी और ना ही हमें उसकी ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमने प्लेट थ्योरी जो है वो पढ़ ली है। जस्ट अब स्लाइड 7 पे मूव करें। इन दिस स्लाइड 7 अगेन एन अदर मैथमेटिकल वर्जन ऑफ equation is given where you can calculate the outcome based number of theoretical plates. N is equal to 5.4, TR is retention time, and W half. What is W half? That is a peak width. Peak width F half of its height. क्योंकि एक पीक है, उसकी टिप भी होती है, उसके बॉटम भी होता है, तो आपने अगर विड्थ लेनी तो कहाँ से लेनी है, तो उसकी एग्जैक्टली जो हाफ हाइट है पीक की वहाँ से विड्थ ले लें, उसको कहते हैं डब्ल्यू हाफ। अगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट कर दें, इसका मतलब है कि कोई भी कॉलम है और अगर आप सेपरेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास रिटेंशन टाइम आएगा किसी एक पीक का, जिसको हम टी आर कह रहे हैं, और उस पीक की जो है वो हाफ हाइट पे जो है विड्थ होगी, वो ले लें 5.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो प्लेट काउंट आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एन। तो इसका मतलब है आपका कॉलम किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो आउटकम बेस्ड है। हाइट ऑफ द पीक ऑफ कोर्स उसका ताल्लुक जो है वो आपके कॉलम के स्टेशनरी फेज के साथ भी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन सी कंडीशंस हैं जो इस प्लेट हाइट को वेरी करेंगी, और आगे चल के फिर हमने पढ़ना है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके विड्थ को जो है वो कंट्रोल करते हैं।
विड्थ का मतलब क्या है कि दिस इज़ द सेपरेशन एफिशिएंसी, जितनी विड्थ नैरो होगी उतनी ही रेजोल्यूशन जो है वो बेहतर होगी। तो ये जो स्लाइड 7 है ये जस्ट एक और वर्जन है जिसके ज़रिए आप नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स किसी भी कॉलम की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, coming to slide 8, this is very important because in the previous slides I have talked about the conditions which control the separation efficiency, कि ये जो n है या जो हाइट है, क्योंकि n का ताल्लुक डायरेक्टली हाइट इक्विवेलेंट टू थ्रेटिकल प्लेट के साथ है, तो आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए आप हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वान डिम्टर इक्वेशन में भी है, इनफैक्ट ये जो इक्वेशन है ये दो बहुत ही जो है वो यूज़फुल वेरिएबल्स, आगे चल के इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे, वान डिम्टर प्लॉट भी आएगा, तो उसमें एक हाइट है और दूसरा उस हाइट का लिंक है फ्लो वेलोसिटी के साथ, मींस फ्लो रेट के साथ, कि आप जो मोबाइल फेज़ है उसका फ़्लो कितना रखते हैं, क्योंकि कॉलम के क्रॉस जो लेंथ ऑफ द कॉलम है जो कि फिक्स्ड है, उसके अक्रॉस मोबाइल फेस ने जो है वो मूव करना है और एनालाइट को जो है वो कैरी करना है। एनालाइट एट वन स्टेज जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा स्टेशनरी फेस के पास, और अगले ही मोमेंट पे वो किस में होगा, वो मोबाइल फेस में होगा। तो अब इसको कंट्रोल कौन सी चीज़ कर रही है, इन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, दैट इज़ द मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस उसका जो फ्लो रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही आपने उसको ज़्यादा रखना है ना ही उसको कम रखना है। तो कौन सा ऑप्टिमम फ्लो वेलोसिटी या फ्लो रेट होगा जिसके ऊपर आपके पास मैक्सिमम सेपरेशन एफिशिएंसी आए, जिसमें से मिनिमम जो है वो हाइट आए और मैक्सिमम जो है वो एन की वैल्यू आए। सो that is very important, how the mobile phase actually controls the height, and in other words it controls the number of theoretical plate, h as a function of mobile phase velocity। और mobile phase velocity को हम क्या शो करते हैं, mu, that means HETP is drawn versus mu in the van Dimter plot। और वो वान डिम्टर प्लॉट जो है वो हमें बताएगा कि आप क्या ऑप्टिमम फ्लो वेलोसिटी रखें कि उसको जो है वो एच जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम आए। वो आगे चल के हम वान डिम्टर प्लॉट को देखेंगे, वान डिम्टर इक्वेशन को देखेंगे, बट इस स्लाइड 8 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ओपन होके आ गई कि फ़्लो वेलोसिटी, क्योंकि जब आपने कॉलम पैक कर लिया तो आपके पास ऑप्शन रह क्या गए हैं, कॉलम की तो क्लोज पैकिंग हो गई, आपने स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज भी चूज़ कर लिया, आपने स्टेशनरी फेज की नेचर भी चूज़ कर ली, वो तो एक पैक्ड कॉलम है, मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपने उसमें से बेस्ट एफिशिएंसी कैसे लेनी है, तो आपके पास एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज़ मोबाइल फेज। ऑफ कोर्स नेचर इज़ इंपॉर्टेंट। इसी लेक्चर में एंड पे दो स्लाइड्स मैंने रखी हैं कि आइसोक्रेटिक इल्यूजन, ग्रेडियंट इल्यूजन, क्योंकि उसका ताल्लुक भी मोबाइल फेस के साथ है, मोबाइल फेस की नेचर के साथ है, कब आपको आइसोक्रेटिक यूज़ करना चाहिए, कब आपको ग्रेडियंट यूज़ करना चाहिए, वो आखिरी स्लाइड्स में 29th और 30th स्लाइड, टोटल इस लेक्चर के अंदर 30 स्लाइड्स हैं, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट एट दिस स्टेज द फ्लो रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द हाइट। That means height varies by varying the mobile flow rate, or you can say the mobile velocity which is shown by mu। और वान डिम्टर प्लॉट जो है वो h वर्सेस म्यू ही प्लॉट होता है, वो आगे चल के हम इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yesterday we talked about the plate theory which works behind the chromatographic process. Today we will talk about another theory, that is the rate theory, that has to do with the flow rate. Again, I mentioned yesterday that you are controlling the height of the plate by controlling the flow velocity or the flow rate. Now when things move across the column, like there is a mobile phase, there is a stationary phase, and then there are the analytes. Now they are controlled by the parameter of the time, and as a result there is a process called as peak broadening. Means in the chromatogram the peaks actually get broadened, and which is not good because for the high resolution we want to have our peak as narrow as possible. Now what are the factors which contribute towards the peak broadening? That is explained by the rate theory. When substances move across the column, it is actually there are multiple things controlled by multiple parameters. One of those parameter is the diffusion.
We will talk about in this Van Dimter equation different types of diffusion processes which actually contribute towards the peak broadening, and how again we can control the flow velocity to get our peak as narrow as possible. So rate theory basically is nothing that is actually the controlling of the movement of the mobile phase, you can say the flow velocity, and how those all factors or the processes they contribute towards the eluted peak. What is eluted peak? That is the peak what is obtained in the chromatogram for any particular component of the mixture, how that peak varies, that is the variance of the eluted peak. And the final equation which is written at the bottom of this slide, that is slide number 9 we are talking about, this is a Van Dimter equation. Across the length of the column, which is the fixed one, how we can achieve the highest possible number we talked about yesterday. Highest possible number is only possible when you can make the plate height as minimum as possible. And this Van Timter equation, the mathematical expression of that, of course it has been derived from many other mathematical equations, but we are not interested in that. But the net version is given h is again HETP, height equivalent to theoretical plate. It can simply be written as h is equal to a plus b over mu plus c mu, c into mu. Few of the books you will see written c into mu, and sometimes mu c can be opened, cm plus cs, m for mobile phase, s for stationary phase. Now what are these terms? As I said, h is height equivalent to theoretical plate. A term, b term, c term, there are three terms in this Van Dimter equation: a term, b term, c term. A term represents the eddy diffusion. We will discuss in the coming slides what is eddy diffusion. B is the longitudinal diffusion, and C term, C is the mass transfer. Now these three terms are there, and the Van Dimter plot is drawn between HETP and the flow velocity. That means when you draw the plot, that plot, the net plot, contains the contribution from the A term, eddy diffusion, B term, longitudinal diffusion, and C, the mass transfer in the mobile phase as well as the stationary phase. Slide 10, again it is just an explanation which I have mentioned, the rate theory of the chromatography. As I have said, this is a process of peak broadening. We can also call it as peak dispersion. How actually peak gets dispersed means it occupies more area, it gets broadened. There are multiple factors, and each factor would contribute towards the total variance of the eluted peak. And final equation I have already given you in the previous slide. H is equal to A plus B over mu plus C into mu. Mu is the flow velocity, A term, B term, and C term. Slide 11 is again talking about the same thing. A term is the eddy diffusion, B term is the longitudinal diffusion, and C has been split now, that is the mass transfer in the mobile phase and then the mass transfer in the stationary phase. And there is always a resistance. What is the resistance? Basically that has to do with the equilibrium. We have already talked about before the rate theory, the plate theory. There are theoretical plates across which the mass is transferring from stationary phase to mobile phase, back from mobile phase to stationary phase. Equilibrium is established, and both theories cannot be segregated, although we are studying them individually, but they are acting parallelly, plate theory as well as the rate theory. Continuing with this rate theory in the slide 12, this theory gives all the description of the processes happening inside the column, as I talked about the different diffusions and the mass transfers. And then, as name is showing, rate theory, it takes into account the to uh, time taken by the solute to equilibrate between the stationary phase and the mobile phase. And this is a bit different from the plate theory, where we assumed that every point at the stationary phase actually acts as a plate, and
and across every plate there is an equilibrium process, and it is a very fast process that in the matter of seconds you are getting theoretical plates in thousands and even in hundreds and thousands. And this is already a clear assumption that this is a very fast process, that there is an equilibrium established and then there is a disruption, and then at a new plate or the imaginary position there is another equilibrium possible. So there we were talking about the equilibration process, which is very fast, and here we are talking about the rate, the time which is taken, or how the mobile phase velocity or the flow rate, that is per unit time how much mobile phase we are passing through the system, how that is actually contributing towards the peak dispersion or the peak broadening. And whatever the resulting band or the ultimate peak obtained after the separation in the chromatogram, that is affected by the rate of elution, means flow rate, means flow velocity. So flow velocity you will change, the peak shape will change, and you need to find the optimal or the optimum flow velocity where you get the minimum plate height, and this you will see in the van Demeter plot in the coming slides. Slide 13 we have already talked about. In the first point, it is said that when solute molecules move across the column, across the stationary phase during the diffusion process, the first means the A term, that talks about eddy diffusion. What is eddy diffusion? That is the solute molecules take multiple paths because across the column through the stationary phase. Even if we talk about one type of component, let's say component A, depending on its concentration, there are a lot of molecules belonging to component A. Now these molecules, they can adopt different routes, different paths across the column. That means it can happen that few of the molecules of component A, they are following one route which is maybe bit shorter than another path where it is bit longer. Like you have a porous stationary phase, it can happen that some of the molecules of that particular component, they are passing through the pores. Some, they are not passing through that many number of pores, and as a result you will see that even the molecules of the same component, they are traveling different distances, and as a result when they will be passing through the detector, the peak of that particular component will get broadened, and that is because of the multiple paths available in the packed column. And this is all about the A term, and in the pictorial representation in the coming slide you will see it very openly. So what is A term? That is the multiple paths available to the solute molecules, and inherently, naturally, then there will be a peak broadening because they will not be reaching to the detector at the same time, because they got actually the different paths. Few paths they are shorter, few paths they are the longer ones, and rest of the things I have already explained. HETP, that is height equivalent to theoretical plate, is equal to A plus B over mu plus C into nu, and now C is already having the meaning of Cm and Cs, that is mass transfer through the mobile phase and then plus to the stationary phase, and all these contribute towards the band broadening. There is nothing new in slide 14. I have explained each and everything already. Slide 15 is talking about more about the van Demeter equation and how these diffusion processes are affected by the flow velocity. Very interestingly, if we talk about the A term, which is the eddy diffusion, what is eddy diffusion? These are the availability of the multiple paths to the analyte across the column. Now this A term, it's very interesting and very important to understand. The A term is not affected by the flow velocity. Means whatever flow rate you take, multiple paths are already there. If it is 1 milliliter per minute, if it is 5 milliliter per minute, actually this is the characteristic of the stationary phase, that how many different type of multiple paths are available. If you increase the flow rate, A term is going to same, because paths are not going to change, because path is the inherent feature of the stationary phase. So
we can say that by varying the flow velocity, a term is not going to be affected. And this you will see in the van Dimter plot, how van Dimter plot is actually having the contribution from a term, b term and c term. So a term is not affected, I am repeating, a term is not being affected by the flow velocity. Simple reason, it is the characteristic of the stationary phase. The multiple paths are available by the stationary phase, so there is no impact. Now we talk about the b term, that is the longitudinal diffusion. Now this is the movement of analyte molecule from the center to the edge of the band. Does that mean? What is a band? When you have a peak, there is a left side, there is a right side, you can say front side, tailing side, and then there is a center. And when peak broadening happens, actually across the center, this front side and the tailing side actually are widened. Now if you will change the flow velocity, b term is going to affect. How it is affected we will see in the next slide, but it is written here, the b term is the movement of analyte molecule outward from the center to the edge of the band. Now if you will increase the flow velocity, then this movement is going to decrease and band will become tighter. But this will be clear in the van Dimter plot, that how it is affected. At this moment you have to understand that a term is not affected by the flow velocity, b term is affected. How it is affected, that will come in the next slide. And then there is a c term, that is also affected by the flow velocity, because as it is a mass transfer, and mass transfer, c is the combination of cm plus cs. So there is already a mass transfer because of the mobile phase, and from the stationary phase the solution happens by the mobile phase. So mass transfer is going to be affected by the flow velocity. So a term, no effect of flow velocity, b and c terms are affected. How they are affected, that you will see in the pictorial representation. Slide 16 is showing the eddy diffusion, where you can see these are the molecules of single component. And if you see on the right side, during the movement, even the molecules of a same component, let's say component A, when they were injected, you can see pre-column zone. It is a kind of very narrow peak, but when they are made effluent, means when they pass outside the column, the same kind of mobile phase is there, same kind of stationary phase there, same kind of interactions are there. Ideally it should happen that they should be moving as a plug flow and there should be no peak broadening. But in fact there is a peak broadening, because when they were diffusing across the stationary phase, what happened was that there were multiple paths available. You can see on the top, and then in the medium, and then in the last one. The longest distance covered is by the molecule or the molecules which are at the bottom, because they were given a different path, the longer path. That means that particular molecule or the molecules adopting this route got bit longer time than the medium. And then medium is I'm talking about the arrow or the direction towards the right in the center. And then you see on the top one, that took minimum time, because the shortest possible route was offered by the stationary phase. So what happened is that due to this diffusion, eddy diffusion or the multiple path diffusion, actually made the peaks broad. Even a same component having the same nature of molecule offering same interaction to the stationary phase, to the mobile phase, but peak broadening is happening because of this eddy diffusion. So there is a differential migration even between the same molecule. Different rates are there, and as a result you will get wider peaks, or the peaks are broadened, which is also. Slide 17 is just another representation, that if you pack your column with porous silica particles, because even if you compare here porous versus non-porous, more number of multiple paths, or you can say more peak broadening will be happening in the case of porous stationary phases, because there are more number of options available, because when pores are offered,
plus the channels between the packed column, both will contribute in terms of the more number of paths available, and as a result more broadening phenomena would be recorded. And this is all different multiple path effects shown here. You can see in the picture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are different kind of porous silica particles shown, and there are different routes when even same when the molecules of the same component, let's say component A, when they enter into the column, they are getting different kind of paths. You can see 1 2 3, and as a result the peak shown is very much the broad. So there should be no confusion now in the A term. But I repeat here, by increasing the flow velocity, the type of paths available are not going to change, the number of paths available, they are not going to change. So there will be no effect on this eddy diffusion or the peak broadening contributed by the A term depending on the velocity. It will remain same. Let's start where we left. We have already discussed slide 17. Actually we are talking about the different terms of the van Dimter equation. As I have mentioned in the text message as well, that there are many mathematical expressions to calculate this all terms as well as the whole van Dimter equation. We will not go into all those details. If time allowed us at the end of the course, we may go into it, but being analytical chemist, you don't have to indulge in all these mathematical calculations. Only thing is that you have to understand the concept behind the working of this and why, because van Dimter equation actually gives you a concept about the band broadening and how these terms actually contribute towards band broadening. This is our interest in this whole van Dimter equation. Now in slide 17 I have already explained the A term, which actually tells about how band is broadening because of the multiple paths available. Even the same molecules of one component, they reach to the detector in different times because of the different routes available to the analytes in the stationary phase. That was the eddy diffusion. In slide 18 there is a longitudinal diffusion which is represented by B. Now what is this diffusion? This is the diffusion carried out by the mobile phase. Now mobile phase is actually carrying your analyte molecules. During that process, what happens is one kind of mobile phase is longitudinally diffusing, carrying the uh, analytes with them. It can also happen that few of the mobile phase, as it is shown in the picture, in the bottom picture on slide 18, that few of the mobile phase molecules, they are getting stagnant into the stationary phase. You have seen that two white circles, they are going inside the groove, that is the stationary phase, they are entering into it. What will happen? That a broadening will be caused. There is a one mobile phase system which is passing through the surface of the stationary phase. This is a zoomed picture. जो मोबाइल फेज के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनालाइट को कैरी करते हुए जा रहे हैं अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज. कुछ मोबाइल फेज के मॉलिक्यूल हैं, डेफिनेटली उनके अंदर एनालाइट मौजूद है, वो जो है वो स्टेगनेंट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो कि सरफेस पे ऊपर मूव कर रहे हैं. लाइक दो आपको जो है वो सर्कल नज़र आ रहे हैं, वो ग्रूव के अंदर चले गए हैं, और इस तरह की बहुत सी ग्रूव जो है वो स्टेशनरी फेज में हो सकती हैं. एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? वो मॉलिक्यूल जो ग्रूव में चले गए मोबाइल फेज के साथ, उनका रिटेंशन टाइम बढ़ गया, और जो अक्रॉस द सरफेस मूव कर रहे हैं वो जो है उनका जो है वो रिटेंशन टाइम कंपैरेटिवली जो ग्रूव में चले गए उनसे क्या होगा? कम होगा. एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? ये आपस में ही जो मॉलिक्यूल थे, अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल फेज सिस्टम, एक मोबाइल है और एक जो है फॉर द टाइम बीइंग जो है वो स्टेगनेंट हो गया ग्रूव के अंदर, और फिर अल्टीमेटली उसके साथ शामिल हो गया, मूव करते हुए डिटेक्टर के पास पहुंच गया. तो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन में भी जो है वो मोबाइल फेज के इस दो डिफरेंस की वजह से जो पीक है वो क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है. तो एडी डिफ्यूजन मल्टीपल पाथ की वजह से बैंड ब्रॉडनिंग है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन है वो मोबाइल फेज की दो टाइप्स की वजह से
जो है वो बैंड ब्रॉडनिंग है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि बी ओवर म्यू, म्यू जो है वो फ्लो वेलोसिटी है और बी टर्म जो है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन। और इसीलिए आपको मोबाइल फेस की दो जो है वो टाइप्स नज़र आ रही हैं, एक टॉप के ऊपर सरफेस के ऊपर है वो मूव कर रहा है अक्रॉस द सरफेस, और एक जो है वो ग्रूव्स के अंदर जा रहा है जो कि स्टैगनेंट हो रहा है, और उस केस में फिर जो कंपोनेंट्स हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड बाय अ स्मॉल। In slide 19, C into mu, that is the C term. C represents the mass transfer. What is mass transfer? As we are aware of that we inject our analytes from one side of the column. Now, during all the separation process, during the separation, the analyte molecules, does not matter how many components are there in the mixture, they are passed out to the other side of the column, becoming the effluent. That means mass has got transferred from one point of the column, that is the opening side of the column, or the where you make the injection, and the other side of the column where separation is ending and the effluent is entering into the detector. सो ये जो उसने टाइम स्पेंड किया है उसके दौरान क्या हुआ है, जो मैस है वो ट्रांसफ़र हुआ है from one point of the column to the other side of the column. Now there are two types of mass transfer as we discussed yesterday, that is mass transfer because across the surface of the stationary phase, and then the mass transfer from the mobile phase. इसलिए हमने इसको स्प्लिट किया था Cm plus Cs. Cs represents mass transfer because of stationary phase and Cm because of the mobile phase. एंड ड्यूरिंग दिस सेपरेशन, कोई भी एक सेपरेशन होगी उसके अंदर ये मैस ट्रांसफ़र होगा, और ये मैस ट्रांसफ़र भी जो है वो म्यू के साथ रिलेटेड। आपने देखा ए टर्म के साथ म्यू नहीं आया, क्योंकि मैंने कल बात की थी कि ए टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्लो वेलोसिटी से। वट एवर फ्लो वेलोसिटी यू यूज़, मल्टीपल पाथ्स आर सेम, एंड एज अ रिजल्ट ए के साथ म्यू नहीं आया, बी के साथ म्यू आया, क्योंकि जो फ्लो वेलोसिटी है वो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन को इफेक्ट करती है। जो सी है वो मास ट्रांसफ़र है, वो फ्लो वेलोसिटी से वो इफेक्ट होता है, इसलिए उन दोनों के साथ बी टर्म और सी टर्म के साथ म्यू आ रहा है जबकि ए के साथ नहीं आया। सो सी क्या चीज़ है, इट इज़ अ मास ट्रांसफ़र। रिलेटेड टू मोबाइल फेज है तो सी एम कहेंगे उसको, रिलेटेड टू स्टेशनरी फेज है तो इट विल बी कॉल्ड एज सी एस। ओवरऑल इट कैन बी टर्म्ड एज सी ओवर म्यू। So this is now just the summarization in the next few slides. Slide 20, this is now overall giving the equation H is equal to A plus B over mu plus C into mu. C is opened into Cm plus Cs. Now term A has already been explained that this is the eddy diffusion. You can read this all detail, that mobile phase moves through the column which is packed with stationary phase. Solid molecule will take different paths. This has already been discussed. Nothing new in this. Molecule may travel unequal distances, and why they travel, because of the multiple paths available. And this will also depend on the size of the stationary phase. And this process and these multiple paths, they are also available in the case of thin layer chromatography, as well as of course it is the characteristic of column chromatography. Slide 21 is talking about the term B. You can see that when you make the injection, because it is a diffusion, or diffusion हम किसको कहते हैं, diffusion is the actually movement from a region of higher concentration to a region of lower concentration. You have injected your sample from one side, concentration is higher, and then the substances are moving towards the other side of column, their concentration is lower, so that's why it is being called as diffusion. And in the diffusion process, if you see in slide 21, in the start there is a narrow peak, and with the passage of time, when it keeps on moving across the column, this width is increasing, and that is the bad broadening, and it is going to happen. Why? Because I have talked about that when there is a diffusion process, substances, because of the mobile phase, stagnant mobile phase, they get dispersed. And keep in mind, this rate theory and plate theory, they are applicable to LC as well as GC. कहीं पे LC में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा किसी टर्म का, कहीं पे जो है वो GC के अंदर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बी टर्म डोमिनेट्स एट लो म्यू, म्यू मीन्स फ्लो वेलोसिटी, एंड इज मोर इम्पॉर्टेंट इन GC देन LC, सिंस जो डेंसिटी होती है गैस की वो ज़्यादा होती है किससे, लिक्विड से, मीन्स इसकी जो मोबिलिटी है
मोबिलिटी जो मालिक्यूल्स की, क्योंकि कीप इन माइंड एलसी के अंदर तो मोबाइल फेज है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। जीसी के अंदर क्या होता है आपके पास, यू हैव द कैरियर गैस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोबाइल कैरियर और मोबाइल फेज। तो वहाँ पे जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए जो टर्म्स की वैल्यूज़ होंगी वो जीसी में कहीं ना कहीं किसी टर्म का ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि लिक्विड से गैस के अंदर जो बी टर्म है उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, बिकॉज एक तरफ अब लिक्विड की डिफ्यूजन के अंदर एनालाइट लिक्विड में डिफ्यूज़ होके जा रहे हैं और दूसरे केस में वो गैस में जा रहे हैं, तो दोनों में जो है वो डिफ्यूजन जो है वो ऑफ कोर्स फ़र्क होगी, क्योंकि गैस का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी डिफरेंट होता है, डिफ्यूज़ करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट होती है। स्लाइड 22 वो भी अगेन जो है वो इसी बी टर्म को जो है वो आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रही है, बट एज आई हैव टोल्ड कि हमने इसकी मैथमेटिकल इन तमाम चीज़ों में जो है वो हमें नहीं जाना है, बाकी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन हो चुकी हैं इस केस के अंदर। अब स्लाइड 23 जो है अगेन ये इसके अंदर सी टर्म है, और सी टर्म मैं पहले बता चुका ये क्या चीज़ है, ये मास ट्रांसफ़र है। अब इसमें अगेन हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं जाना, एक्सेप्ट कि आप जो है वो राइट साइड पे देखें तो सब्सटेंसेस जो है वो कैसे मूव कर रही हैं। देयर इज़ अ स्टेशनरी फेज, देयर इज़ अ मोबाइल फेज इज़ एल्यूटिंग दिस सब्सटेंसेस, एंड देन देर इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्योंकि अब ये दोनों को आपने जो है वो सामने रख के देखना है कि प्लेट थ्योरी भी है जो क्या बता रही है दैट देर इज़ एन इक्विलिब्रियम विच इज़ डिवेलप्ड। हर एक पॉइंट के ऊपर इमेजिनरी पॉइंट को, जिसको हम थ्रेटिकल प्लेट कह रहे हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है, और वहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। और फिर आगे रेट थ्योरी जहाँ पे बताया जा रहा है फ्लो रेट और टाइम के साथ वो जो है वो लिंक्ड है। तो हर एक प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट करके क्या कर रहा है, पी को जो है वो ब्रॉडन कर रहा है। नथिंग इन दिस पिक्चर बताया गया कि मोबाइल फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है, बैंड विड्थ है, जो कि फिर जो है वो क्या हो रही है, कंपैरेटिवली ब्रॉडन हो रही है बिकॉज ऑफ all the terms A, B or C. Now slide 24 is explaining bit detail about the term C. This is a mass transfer and always there is a resistance in the mobility. हमने एक तो बैक प्रेशर के हवाले से देखा था, और वैसे भी जब सब्सटेंसेस कॉलम में मूव करती हैं तो एनालाइट को रेजिस्टेंस का सामना है। This I have already explained in the class as well, that if there is nothing packed in the column, you keep on running the mobile phase with analyte, there will be no separation. And how separation starts, that is when your analyte gets adsorbed onto the stationary phase. That means already there is a hurdle, there is a resistance offered by the stationary phase for the mass transfer, क्योंकि mass transfer क्या है, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द कॉलम टू द अदर पॉइंट ऑफ कॉलम हमने सब्सटेंसेस को मूव करना है। अब एक रेजिस्टेंस ऑफर होगी किससे, स्टेशनरी फेज से। अब दोनों को कंपैरिजन करें, जब मैस ट्रांसफ़र हो रहा है तो मोबाइल फेज में मैस ट्रांसफ़र फास्टर होगा, और जो स्टेशनरी फेज के साथ चीज़ अटैच होगी वो थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, मालिक्यूल एक ही कंपोनेंट के हैं, लेकिन वो कुछ जो है वो स्टेशनरी फेज से एड्जॉर्ब हो जाते हैं। मोबाइल फेज जब एल्यूट करता है वो थोड़ा सा स्पीडीली मूव करता है, और मैस ट्रांसफ़र के अंदर फ़र्क आ जाता है, और इसी फ़र्क की वजह से जो पीक है वो क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। अब इमेजिन करें एक स्टेशनरी फेज है, ये सारी डिटेल इसके अंदर स्लाइड 24 में इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया हुआ है कि व्हेन सर्टन सब्सटेंस हैज़ गॉट मोर अफिनिटी और मोर एड्जॉर्प्शन पावर टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज, उसको एल्यूट करना डिफिकल्ट होगा। अब उसके कंपैरिजन में कुछ एनालाइट के मालिक्यूल जो है मोबाइल फेज में है वो फास्टर मूव कर जाएंगे, और ज़्यादा अफिनिटी की वजह से स्टेशनरी फेज में वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, बैंड जो है वो क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर जो है वो फ्लो वेलोसिटी का जो है इफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लो वेलोसिटी दे देंगे, एड्जॉर्प्शन को तो आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एनालाइट की जो है वो स्टेशनरी फेज के साथ है। अब मोबाइल फेज वेलोसिटी के साथ आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको तो इम्पैक्ट करेंगे, बट वो एड्जॉर्प्शन जो इंटरेक्टिव पावर है वो रहेगी, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, पीक ज़्यादा ब्रॉड कर जाएगी। जब इसको वन डिप्टर प्लॉट में देखेंगे कि जो सी टर्म है वो कैसे इफेक्ट होती है मोबाइल फ्लो वेलोसिटी से, तो और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट मैस ट्रांसफ़र बिकॉज ऑफ स्टेशनरी फेज, बिकॉज ऑफ मोबाइल फेज, इसके डिफरेंस की वजह से भी जो मालिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं, एंड एज अ रिजल्ट पीक जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, जिसको हम फिर ब्रॉडनेस कहते हैं। वट एवर डिस्कशन वी हैव मेड about this, now this is clear from the Van Dimter plot.
I have already mentioned A term, B term, C term, and two variables are there. And what was the purpose was to get the maximum efficiency. According to plate theory, you have to create maximum number of theoretical plates. And how you can create in a fixed length of column maximum number of theoretical plate? By reducing the plate height. तो वन डिमेटर प्लॉट में जो प्लॉट होता है वो दो वेरिएबल के दरमियान में प्लॉट होता है, ग्राफ उसका ड्रा किया जाता है. एक क्या चीज़ है? यू हैव द प्लेट हाइट, and that plate height is being controlled by the flow velocity. So on y-axis you have h, which is plate height. It is also represented as HETP, height equivalent to theoretical plate. On x-axis you have the mobile flow velocity. Now on the left side, the individual terms are being explained, how individual term contribute towards plate height by increasing the flow velocity. This is very important to understand. Van Demeter plot is in between plate height and mobile phase velocity. But don't forget, in this Van Demeter model or in this equation, there was not only these two variables, there were also the terms A term, B term and C term. सो इस लिंकेज को समझें कि मोबाइल फेज वेलोसिटी से जो प्लेट हाइट है वो कैसे चेंज होती है इन टर्म्स के हवाले से. हमने बात की थी ए टर्म से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जो ए टर्म है मोबाइल फेज वेलोसिटी इंक्रीज करने से ए टर्म की जो कंट्रीब्यूशन है प्लेट हाइट की तरफ वो चेंज नहीं होती. और इसलिए अब आप देखें ए टर्म, अब इंडिविजुअली ये सब टर्म जो है वो हाईलाइटेड है. ए टर्म के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. कि जो प्लेट हाइट थी मोबाइल फेज वेलोसिटी बढ़ाने से जो ए टर्म क्या है, अब कॉन्सेप्ट को मत भूलें, वो क्या है? दैट इज द एडिड डिफ्यूजन, द मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, वो मल्टीपल पाथ सेम रहेंगे. इसका मतलब है कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्लेट हाइट वो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब मल्टीपल पाथ चेंज नहीं हो रहे, ए टर्म बदल ही नहीं रही, तो उसकी वजह से जो प्लेट हाइट की तरफ कंट्रीब्यूशन आना था वो नहीं आएगा. सो दैट्स वाई यू आर सीइंग अ स्ट्रेट लाइन, नो चेंज इन द ए टर्म विद रिस्पेक्ट टू प्लेट हाइट बाय इंक्रीजिंग द मोबाइल फ्लोज वेलोसिटी. नो वी कम टू द बी टर्म. अब बी टर्म को पहले गौर से देखें कहाँ से कहाँ आ रही है. बी टर्म क्या हो रही है कि जब आप मोबाइल फेज वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू करते हैं तो प्लेट हाइट कम होना शुरू हो जाती है, और वो कम होती जाती है, और एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि आप वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वो जो है वो लाइन स्ट्रेट हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? बाय इंक्रीजिंग द मोबाइल फ्लो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी टर्म विच इज द लॉन्गिट्यूडल डिवीजन, द प्लेट हाइट फर्स्ट डिक्रीजेस. और हमारा पर्पस भी क्या है कि हमने प्लेट हाइट को मिनिमम करना है. जितना मिनिमम करेंगे फिक्स लेंथ ऑफ कॉलम में, फिर उतना ही जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हाइट जो है वो कम करते जाने से फिक्स लेंथ के अंदर नंबर जो है वो थ्योरेटिकल प्लेट का बढ़ेगा. और हमारा पर्पस भी यही है. तो हम मोबाइल फेज वेलोसिटी को बढ़ाते गए, प्लेट हाइट कम होती गई, और एक पॉइंट आया कि अब प्लेट हाइट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा. तो फिर ये एग्जैक्टली द पॉइंट जहाँ पे आके बी टर्म की वजह से प्लेट हाइट जो है वो मिनिमम हो गई है. अब आ जाते हैं सी टर्म के ऊपर. सी टर्म के लाइन को देखें, वो क्या हो रहा है? If you increase mobile phase velocity, the plate height is increasing. और क्या हमने प्लेट हाइट को इंक्रीज करना है? नहीं करना, हमने तो कम करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक कंप्रोमाइज़ है. बी टर्म जो है वो तो कम होती जा रही थी, इसका मतलब हमें मोबाइल फेज वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा. और जो ही बढ़ाते हैं तो सी टर्म की वजह से जो प्लेट हाइट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है. और ये जो तीनों टर्म्स हैं, मैस ट्रांसफ़र हो, लॉन्गिट्यूडल डिफ्यूजन हो, एडिड डिफ्यूजन, ये एट अ टाइम हो रही हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? वी नीड अ कंप्रोमाइज़. और आगे चल के जो राइट साइड पे हमारे पास प्लॉट है वो सिचुएशन को क्लियर कर देगा कि वो कंप्रोमाइज़ क्या है. कि एक ऐसे पॉइंट पे हमने मोबाइल फ्लोज वेलोसिटी को रखना है जहाँ पे ए टर्म पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बी और सी टर्म का जो है वो इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास आए कि हम जो है वो प्लेट हाइट मिनिमम जो है वो अचीव कर सकें. सो कमिंग बैक, जो सी टर्म है मैस ट्रांसफ़र है, दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द फ्लो वेलोसिटी.
और उसके अंदर भी थोड़ा सा फ़र्क, अगर राइट साइड पे देखें तो इस सी टर्म को जो है वो हाइट के हवाले से जो है वो बताया गया है कि सी एस टर्म जो है और सी एम टर्म, इन दोनों में भी थोड़ा सा फ़र्क है। स्टार्ट में तो सेम है, बट आगे चल के जो गैप है वो थोड़ा सा जो है वो वाइड हो रहा है। मींस अगर आप इसको स्प्लिट करके देखें तो जो सी एस टर्म है, मैस ट्रांसफ़र ऑन द स्टेशनरी फेज, ठीक है, उसकी वजह से जो प्लेट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एट सेम पॉइंट ऑफ द फ्लो वेलोसिटी, बट उसके अंदर कोई ज़्यादा गैप नहीं है। और राइट साइड पे जो है वो एट द एंड अगर आप इन तीनों टर्म को मिला लें तो आपके पास एक कंपोजिट कर्व बन रही है, जिसको हम फिर वान डिम्टर प्लॉट कहते हैं। वो क्या उसके अंदर है, उसके अंदर तीनों चीज़ें मर्ज्ड हैं। ए टर्म भी मर्ज्ड है, बी टर्म भी, सी टर्म भी, एज आई सेड दे ऑल हैपन पैरेलली। हमने इसको इंडिविजुअली स्टडी ज़रूर किया है, बट ये पैरेलल जो है वो ये सारा फिनोमिना हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर आप अब ओवरऑल कंपोजिट कर्व को देखें बाय कीपिंग ऑल द ए टर्म बी सी टर्म के वो कैसे उन्होंने एच की तरफ कंट्रीब्यूट किया, तो ओवरऑल अब कंपोजिट नेट वन डिप्टर प्लॉट को देखें तो क्या हो रहा है, व्हेन यू इंक्रीज्ड द फ्लो वेलोसिटी व्हाट हैपेंड, प्लेट हाइट जो है वो कम होना शुरू होगी। अब हम ए बी सी की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल मैं कंपोजिट कर्व की बात कर रहा हूँ। हाइट कम होती जा रही है और एक पॉइंट पे आके थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेट हुई। वो स्ट्रेट क्यों हुई, ये इसके अंदर एक डीप ग्रूव भी आ सकता था, शार्प ये टर्न लेके फ़ौरन ऊपर की तरफ मूव कर जाती, नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर ए टर्म की कंट्रीब्यूशन भी शामिल है, और ए टर्म क्या है, वो स्ट्रेट थी, इसलिए ये थोड़ी सी आके लाइन जो है कंपोजिट कर्व में आके स्ट्रेट हुई है और फिर इसने ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। अब देखें कंपोजिट कर्व में वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है, वो ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है बी टर्म का, कि बी टर्म इमीडिएटली जो है वो हाइट उसकी कम हुई है। उसके बाद ये ऊपर क्यों गई है, ठीक है, वो आपको पता है कि सी टर्म जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ करती है उसके ज़रिए, ठीक है। और दरमियान में स्ट्रेट क्यों आया कंपोजिट कर्व में थोड़ा सा, वो जो है वो इसलिए आया कि उसके अंदर ए टर्म है। तो वान डिम्टर प्लॉट हमें ये एग्जैक्टली बता देता है कि अब आप देखें उस पॉइंट को जो है वो नीचे राइट साइड पे म्यू ओ पी टी लिखा हुआ है, दैट इज़ द ऑप्टिमम। ऑप्टिमम जो है फ्लो वेलोसिटी क्या होगी, ओ पी टी फॉर ऑप्टिमम, कि उस पॉइंट के ऊपर अगर आप उससे कम फ्लो वेलोसिटी रखते हैं तो क्या हो रहा है, अभी प्लेट हाइट कम होते जा रही है, तो फ्लो वेलोसिटी बढ़ाते जाएं, और एक पॉइंट के बाद बढ़ाते हैं तो फिर प्लेट हाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है प्लेट हाइट बढ़ेगी, नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट कम होगी, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। सो दिस क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ लेबल्ड एज म्यू ओ पी टी, दैट इज़ द ऑप्टिमम फ्लो वेलोसिटी विच विल शो द मिनिमम प्लेट height, and that is the flow rate which needs to be adjusted to get the maximum efficiency of the theoretical plates or the number of theoretical plate, and as a result overall separation efficiency. Slide 26 is again the same representation of the van Dimter plot. Now everything is summarized in this. You can see this is the composite curve which is shown here. With mobile phase velocity, plate height is decreasing, and one point where it is optimum velocity, and then it is increasing. All the contributions are shown here. This is a good representation of the van Dimter plot. The net plot always looks like this, and you are searching for this critical point where you have the minimum plate height. And as I have already mentioned that these are all the imaginary points. और तो इमेजिनरी है ये सारा कुछ अचीव करना है कि आप किस फ्लो वेलोसिटी पे रहेंगे कि आपके पास जो है वो प्लेट हाइट मिनिमम रहे। और ये सारा आप नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट मैं पीछे भी बता चुका हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आउटकम है। जो ही आपके पास एक क्रोमेटोग्राम आता है तो आप उसमें जो है वो पी को देख के बता सकते हैं कि आपने जो है वो कितनी एफिशिएंसी जो है वो की है। हाफ पीक हाइट विड्थ को जो है वो हाफ पीक हाइट पे मेजर कर लें, उसके अंदर जो है वो एक फैक्टर था 16 का, और उसका स्क्वायर लेके आप उसका जो है रिटेंशन टाइम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके किसी भी कॉलम के अंदर थ्रेटिकल प्लेट हैं कितनी। Bismillahirrahmanirrahim. We were at slide 25 of van Dimter equation. Principally, we had talked about everything of van Dimter equation. In this figure, again I am repeating on this slide 25. We have already discussed this slide that height equivalent theoretical plate is dependent on three terms. Basically, in this model, we plot this height versus the flow velocity, and you have seen that how a term
is not affected in terms is not affecting the height by increasing or decreasing the flow velocity, how B is first decreasing in terms of plate height and then getting stable and then increasing, and C term all along it keeps on increasing by increasing the flow rate. And then we talked about the composite curve, that is the net curve, which actually gives you the right flow rate or the flow velocity to get the minimum plate height, because the minimum plate height would ensure the maximum number of theoretical plates, and maximum number of theoretical plates means maximum efficiency. Slide 26 is again this von Dimter plot, the net one, because all A, B, C terms they are merged, and they are shown here as well, that how A and B and C terms are incorporated into the net von Dimter plot. It's very interesting. A is drawn where plate height is not being affected. B is first decreasing and then increasing. C is all along increasing. So the net von Dimter plot contains the contribution of A term, B term, and C term. So just finally I am saying very important thing, that is, which I have repeated many times, that plate height has to be kept minimum by controlling the flow rate. That means whatever column you have, you can still improve the efficiency by decreasing the plate height, which is actually controlled by the flow velocity. In slide 27, this is just the description of the picture given on slide 28, where you can see, let's first go to slide 28, where you can see the impact of the different particle sizes. When you increase the flow velocity or the flow rate or the linear velocity, how the plate height is affected by changing the particle sizes. Like in this figure you can see that there are four kind of different particle sizes packed into the column, like 10 micrometer, 5 micrometer, 3 micrometer, and 1.9 micrometer. Now if you keep on varying the particle size, or if the particle size is reduced, what you see is that by increasing the flow velocity, height is minimally affected. If you see the 10 micrometer just on the above side, what happens is, when you increase the flow velocity, height decreases, gets stable, and then it starts increasing, and this impact is decreasing by decreasing the particle size. You can see in the 5 micrometer the plate height is being affected, 3 micrometer it is affected bit less, but in the case of 1.9 micrometer, what happened that in the start, by increasing the flow velocity, like going from 0 to 0.1, plate height is decreasing, but when you increase the flow velocity to 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 centimeter per second, there is no effect on the plate height. This is very interesting phenomena, that there is no effect on the plate height when particle size has been reduced to 1.9 micrometer. What you take out of it, that is, when you have the particle size smaller in this column, by increasing the flow rate, there is not much impact onto the plate height. So what you conclude out of it, another conclusion can be drawn, that what should be our preference, the larger particle sizes or the smaller particle sizes? Sure, we should prefer to take the smaller particle sizes, because in that case flow rate is not affecting the plate height that much, and as a result you have the better efficiency. And why is it so? It is given in the previous slide as well. But first, the conclusion is written on the top of this picture. Smaller particle size yield higher overall peak efficiencies and much wider range of usable flow rate. Another important thing, in 10 micrometer you had a small flow rate where you had the minimum plate height, but when you have 1.9 micrometer, means smaller particle size, you have a huge range of flow rates to work with. आप कोई भी फ्लो रेट जो है वो यूज़ कर लें, वो प्लेट हाइट को उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप फिर कोई भी जो है वो फ्लो रेट यूज़ करेंगे टाइम को कम करने के लिए, सेपरेशन को,
तो एफिशिएंसी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। लार्जर पार्टिकल साइज़ में ये एफिशिएंसी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि प्लेट हाइट एक वक्त के बाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लाइक अगर आप 10 माइक्रोमीटर को देखें, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1 it decreases, plate height decreases, but till 0.3, 2.4, 0.5, 0.6, the plate height has started increasing. So 10 micrometer versus 1.9 micrometer, आप जो है 0.1 से लेकर 0.6, 0.7, 0.8 तक कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा प्लेट हाइट में, वो जो है वो सेम रह रही है। तो इसका मतलब है आपके पास लिबर्टी बढ़ गई कि आप जो है वो कोई भी फ्लो रेट यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी जो है वो मिनिमाइज नहीं होगी, उससे प्लेट हाइट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट इसका मतलब वही रहेंगी। तो लार्जर पार्टिकल साइज़ में आपके पास जो विंडो ऑफ वर्किंग होगी फ्लो रेट की वो कम होगी, स्मॉलर पार्टिकल साइज़ में वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है वो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो मटेरियल हम पैक करते हैं, स्मॉलर साइजेस पैक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी क्यों एनहांस होती है और किस तरह से आप जो फ्लो रेट्स हैं, श्योर कीपिंग इन माइंड द फिनोमिना ऑफ बैक प्रेशर एटसेट्रा, वो तो हम करेंगे ही, उससे इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। इसलिए जो है वो स्मॉलर पार्टिकल साइज जो है वो प्रेफर किए जाते हैं। अब आप इसी चीज़ को फिनोमिना को जो है थ्योरेटिकली रीड कर सकते हैं। बैक टू दिस स्लाइड 27, यू कैन सी ऑल डिटेल इज़ गिवन हियर, जो मैंने पहले भी बता दी है कि जब आप पार्टिकल साइज कम करते हैं तो फ्लो रेट का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। मीन्स फ्लो रेट आप उसके अंदर वेरिएशन भी लेके आते हैं, उसके इंक्रीज़ करते हैं, तो प्लेट हाइट जो है वो कम नहीं होती। इसलिए पार्टिकल साइज़ जो है वो कम रखना चाहिए। अब उसकी रीज़न क्या है? द स्मॉलर पार्टिकल्स हैव शॉर्टर डिफ्यूजन पाथ लेंथ्स। अगर आप मल्टीपल पाथ्स की भी बात करते हैं तो बड़े पार्टिकल साइज़ को जब पैक करते हैं तो मल्टीपल पाथ बढ़ जाते हैं। स्मॉलर पाइक में क्या होगा स्मॉलर पार्टिकल साइज़ में कि आपका इवन अगर पोर्स भी हैं तो स्मॉलर पार्टिकल साइज़ में से वो पोर में से जो है वो आपका सल्यूट बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा। मीन्स पार्टिकल साइज का इम्पैक्ट नहीं होगा उतना। लेकिन अगर लार्जर पार्टिकल साइज है और उसके अगर पोर्स हैं, वो पोरस है, तो वो जो है उसको जो मल्टीपल पाथ और उसकी वजह से जो रिटेंशन टाइम है उसके अंदर जो वेरिएशन होगी वो ज़्यादा होगी। स्मॉलर पार्टिकल साइज में वो जो है वेरिएशन कम होगी। इसलिए कैटेगोरिकल लिखा हुआ है स्मॉलर पार्टिकल्स हैव शॉर्टर डिफ्यूजन पाथ लेंथ्स अलाउइंग अ सॉल्यूट टू ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ द पार्टिकल फास्टर, क्योंकि पार्टिकल साइज कम है। So therefore analyte does not spread much, there is not much peak broadening and efficiency is higher. Rest of the paragraph about figure 2 जो कि 28 पे थी वो मैं already explain कर चुका हूँ। This is the end of Van Dimter equation, Van Dimter plot, and how the theoretical models work in the chromatographic column. We discussed about the rate theory, the plate theory, and there are uh, two more slides which I would share in the next of the lectures, which they are mainly based on GC, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो दो स्लाइड्स होंगी वहाँ पे मैं आपको जो मैथमेटिकल एक इक्वेशन थी, हाउ यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल प्लेट्स इन अ कॉलम, तो उसको मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। एट द मोमेंट वान डिम्टर प्लॉट इज़ ओवर। अच्छा, मैंने एक जगह पे रेफरेंस दिया था कि मैं एंड पे जो है वो आपको बताऊँगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एल्यूशन प्रेफरेंस शुड बी देयर। लाइक do you want to use isocratic elution mode or the gradient elution mode? There is a very small calculation behind this in slide 29. Either you should prefer isocratic or the gradient elution. It's very simple. If you go to the left side of this slide, there is given one chromatogram. It's very important to understand that on the x-axis scale retention time is given, and that is starting from 0 going to 18 minutes. This is labeled as TG, total time of the gradient, 18 minutes from 0 to 18. And then there is delta TG. What is delta TG? That is the first peak when it is eluted and the last peak when it is eluted. Delta Tg, that is the difference in the retention time of the first peak and the last peak. Like you can see in the picture, the first peak is appearing at, let's say, 3 minutes time on the x-axis because 1 is almost invisible। तो अगर आप देखते हैं तो पहली जो पीक एल्यूट होके आ रही है वो 3rd मिनट पे आ रही है और जो लास्ट आ रही है वो 13 मिनट पे आ रही है, उसके ऊपर लेबलिंग की हुई है।
तो डेल्टा टी जी का क्या होगा, 13 माइनस 3 मीन्स जो लास्ट पीक आई है एल्यूट होके और जो फर्स्ट पीक है उनके दरमियान में कितना टाइम गैप है, वो है 10 मिनट्स का। 13 माइनस 3, 10 मिनट्स। सो इफ़ यू डिवाइड डेल्टा टी जी विद टी जी मीन्स ये जो डिफरेंस आया है 10 और डिवाइडेड बाय जो टोटल ग्रेडियंट का टाइम था वो हमारे स्केल से जो है वो जाहिर है वो 18 है। सो 10 डिवाइडेड बाय 18 यू गेट द आंसर 0.8। नाउ अ प्रिंसिपल, अ जनरल प्रिंसिपल, एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल इज दैट इफ दिस रेशो, कौन सी रेशो, डेल्टा टी जी डिवाइडेड बाय टी जी, इफ दिस रेशो इज इक्वल आर ग्रेटर देन 0.25 then you must go for gradient illusion, and if this ratio is less than or equal to 0.25 then go for isocratic illusion। तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, आराम से ये कैलकुलेशन हो जाती है कि अगर आपने एक कॉलम पे सेपरेशन की है और आप वहाँ पे देखें जो फर्स्ट एल्यूट हुई पीक और जो लास्ट हुई उनका गैप निकाल लें और जो टोटल एक्स एक्सेस पे हमने टाइम यूज़ किया उसको डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा उसको 0.25 के साथ जो है वो कंपेयर कर लें। वो कंडीशन जो है वो सामने लिखी हुई है। तो इसलिए समटाइम्स आप जो है वो ग्रेडियंट इल्यूशन रिक्वायर्ड होती है और आप आइसोक्रेटिक को प्रेफर करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है समटाइम आप बहुत सारा सॉल्वेंट वेस्ट कर देते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मोर इम्पॉर्टेंटली जो पीक्स हैं वो रेजोल्यूट नहीं हो पाती। बिकॉज व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेडियंट इल्यूशन, दैट इज़ एक्चुअली चेंजिंग द पावर ऑफ द इल्यूशन कंट्रोल्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस। अगर आप आइसोक्रेटिक यूज़ करते हैं तो इट विल बी सेम, कंपोजिशन विल सेम, और जो इंट्रैक्शन को डिसरप्ट करने की जो तमाम पावर्स हैं वो सेम रहेंगी। तो इसका मतलब है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो उसके अंदर एनालाइट्स हैं वो एल्यूट होके आएंगे। तो ग्रेडियंट जो है वो आपकी एल्यूशन स्ट्रेंथ को वेरी करता है फ्रॉम वीकर मोबाइल फेस टू द स्ट्रॉन्गर मोबाइल फेस, and this is evident in the last slide, that is slide number 30, isocratic or gradient illusion. In the above chromatogram you can see separation has started from 0 to 30 minutes. In the start peaks are good, but when you cross 10 minutes then peaks are not that much height, height has been lost, and more importantly number of peaks have been reduced, they are not getting separated properly, they are merged, broad peaks आ रही हैं। और अगर आप इसको ग्रेडियंट पे लेके जाते हैं तो इमिजिएटली आप इम्पैक्ट देखें। अब यहाँ पे जो नीचे वाली जो पिक्चर दी हुई है बॉटम पे उसमें क्या है, ये 0 से लेकर 10 तक तो वो पीक्स शो नहीं की गई, बट वो वही वाली पीक्स हैं जो ऊपर हैं। बट अब आगे का इम्पैक्ट देखें 10 के बाद वाला, कि ये पीक्स जो हैं वो अबव क्रोमेटोग्राम में कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही हैं, जबकि आपने जब ग्रेडियंट पे शिफ्ट किया तो ये पीक सारी की सारी जो है वो प्रॉपरली आपको प्रॉपरली रेजोल्यूटेड भी नज़र आ रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बढ़ गई है जो कि आपके पास आइसोक्रेटिक में नहीं थी। अगर आप कंडीशंस को देखें तो टॉप पे क्या दिया हुआ है कि ये एक आइसोक्रेटिक सेपरेशन है, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटली परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, कि जो एनवायरमेंट के पॉल्यूटेंट्स हैं उनको जो है वो सेपरेट किया गया है। कौन सा कॉलम लिया आपने, C18 कॉलम है, दैट इज़ शोइंग कि आपका ये एक रिवर्स्ड फेज़ है। 4.6 सेंटीमीटर उस कॉलम की लेंथ है, 150 मिलीमीटर उसकी विड्थ है, 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज आपने उसके अंदर पैक किया हुआ है, और आइसोक्रेटिकली वाटर एसीटोनाइट्राइल 40-60 की रेशो के साथ आपने फिक्स कर दी कंपोजिशन, और फ्लो रेट आपने रखा 2 मिलीलीटर पर मिनट। अब इसी के कॉलम को अगर आप जो है वो सारी कंडीशन सेम है, अगर आप बॉटम पे देखें कंडीशंस को तो ग्रेडियंट सेपरेशन की है, सैंपल सेम है, वही पॉल्यूटेंट्स हैं, C18 कॉलम है, 4.6, 150 मिलीमीटर, 5 माइक्रोमीटर। इवन आपका जो मोबाइल फेज है वो बाय नेचर सेम है, वाटर सिटोनाइट्राइड, लेकिन अब हमने उसको आइसोक्रेटिक से, वो वहाँ पे 40-60 रेशो फिक्स थी वाटर सिटोनाइट्राइल की, और यहाँ पे हमने उसको जो है वो वेरी कर लिया। कैसे वेरी किया कि अब 5 से लेकर 95% तक हमने इस रेशो को वेरी किया वाटर और सिटोनाइट्राइल की, कि मीन्स सिटोनाइट्राइल कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते गए, 5 से लेकर कहाँ चले गए 95% तक इन 25 मिनट्स, और फ्लो रेट वही रखा। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो पीक्स थी वो 10 मिनट्स के बाद वाली वो सारी की सारी जो है वो शो हो गई। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम आइसोक्रेटिक टू ग्रेडियंट। तो अब आप इन्फॉर्मेशन लूज ना करें, एक अच्छा जो सेपरेशन केमिस्ट होगा वो पहले एक क्रोमेटोग्राम रन करके देख लेगा और वहाँ से एक वैल्यू कैलकुलेट कर ले, डेल्टा टी जी ओवर टी जी, और वहाँ से 0.25 के अगेंस्ट उसको कंपेयर कर लें कि क्या आपके जो मिक्सचर है उसमें आपको आइसोक्रेटिक एल्यूशन की ज़रूरत है या फिर ग्रेडियंट एल्यूशन की ज़रूरत है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा हुआ था आइसोक्रेटिक वर्सेस ग्रेडियंट, और इसका इम्पैक्ट आपको स्लाइड 30 के अंदर भी नज़र आ रहा है कि अगर आप सेपरेशन को आइसोक्रेटिकली करते रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी लूज़ हो जाएगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एविडेंट नहीं होंगे, प्रॉपरली वो रेजोल्यूट नहीं होंगे. सो दिस कैलकुलेशन मस्ट बी डन to see that how gradient evolution can impact your separation.